अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 11 द डियर डिपार्टेड की कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में पार्ट ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू द एक्शंस एंड वर्ड्स ऑफ मिसेस लेटर एंड मिसेस जॉर्डन रिवील अबाउट देयर ट्रू मोटिवेशंस। इसका आंसर है मिसेस लेटर एंड मिसेस जॉर्डन्स एक्शंस शो दे आर सेल्फिश एंड केयर मोर अबाउट मनी देन फैमिली. They want to inherit Mr. Merriweather's possessions. Question number 2 है how does the conflict over Mr. Merriweather's possessions drive the plot of the play? इसका आंसर है the conflict drives the plot by showing the characters' true values. It creates tension and reveals their selfishness. Question number 3 है in what ways does Stanley Houghton use satire to criticize family dynamics and social values? इसका आंसर है Stanley Houghton uses satire to mock the characters' selfishness and materialism. He ridicules their flaws to criticize societal values. Question number 4 है how does the play challenge the traditional idea of family unity and affection? इसका आंसर है the play shows a family that prioritizes wealth over love. It challenges the idea of a united family. Question number 5 है what role does the clock on the mantelpiece play in the story? इसका आंसर है the clock symbolizes time passing and death. It reminds characters of their mortality. Question number 6 है how does Victoria's character differ from the adults around her? इसका आंसर है Victoria is innocent and genuinely grieves. She is different from the selfish adults. Question number 7 है how do the characters display hypocrisy throughout the play? इसका आंसर है the characters' hypocrisy is evident in their contradictory words and actions. They masquerade as grieving family members while secretly scheming for wealth. Question number 8 है how does the setting of the play affect the characters' interactions? इसका आंसर है the confined space highlights the characters' strained relationships. It shows their lack of communication. Question number 9 है how does Stanley Houghton organize the sequence of events? इसका आंसर है Stanley Houghton masterfully structures the play, gradually exposing characters' flaws and escalating the conflict. This deliberate pacing heightens tension. Question number 10 है how do the themes of The Dear Departed remain relevant today? इसका आंसर है materialism still affect family relationship. Families fight over inheritances. Part B है choose the correct option for each questions. ये MCQs हैं. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनके नीचे इनके ऑप्शंस दिए गए हैं. जो ऑप्शन आपको यहाँ से करेक्ट लग रहा है आपने उस पर टिक मार्क कर देना है. फर्स्ट है व्हाट डज द बिहेवियर ऑफ मिसेस लेटर एंड मिसेस जॉर्डन प्राइमरली रिवील अबाउट देयर कैरेक्टर्स. ऑप्शन ए है दे आर अफेक्शनेट एंड केयरिंग डॉटर्स. ऑप्शन बी है दे वैल्यू मटेरियल वेल्थ ओवर फैमिली बॉन्ड्स. ऑप्शन सी है दे रिस्पेक्ट देयर फादर्स मेमोरी एंड लेगेसी. Option D है they are indifferent to their father's possessions. Option B is the correct option. They value material wealth over family bonds. Second है why is the setting of a single room, the living room, significant in the play? Option A है it highlights the family's financial struggles. Option B है it creates an intimate space where the characters' true natures are revealed. Option C है it allows for more dramatic costume changes. Option D है it serves as a symbol of the family's closeness and unity. Option B is the correct option. It creates an intimate space where the characters' true natures are revealed. Third है how does Victoria's reaction differ from the adults when discussing Mr. Merriweather's possessions? Option A है she is indifferent and does not care about the inheritance. Option B है she criticizes the adults for their materialism. Option C है she shows confusion hinting at their innocence compared to the adults' greed. Option D है she eagerly participates in claiming possessions. Option A is the correct option. She is indifferent and does not care about the inheritance.
फोर्थ है हाउ डज स्टैनली हाउटन यूज सटायर इन द डियर डिपार्टेड। ऑप्शन ए है टू exaggerate द फैमिलीज लव फॉर ईच अदर। ऑप्शन बी to humorously criticize the character's hypocrisy and greed. Option C, to create tension and suspense among the characters. Option D, to present a tragic view of death and mourning. Option B is the correct option, to humorously criticize the character's hypocrisy and greed. Fifth है the clock on the mantelpiece can be interpreted as a symbol of। ऑप्शन ए है द पासिंग ऑफ टाइम एंड रूटीन इन द फैमिलीज लाइफ। ऑप्शन बी है द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ मिस्टर मैरी वेदर। ऑप्शन सी है द बॉन्ड बिटवीन द स्लैटर सिस्टर्स। ऑप्शन डी है द मेमोरीज दैट द फैमिली चेरिशेस। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, द पासिंग ऑफ टाइम एंड रूटीन इन द फैमिलीज लाइफ। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में पार्ट ए है फाइंड द कॉनिटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनों के डिनोटेटिव और कॉनिटेटिव मीनिंग्स को लिखना है। फर्स्ट है प्रिकॉशियस, इसका डिनोटेटिव मीनिंग आ जाएगा डिवेलपिंग और मैच्योरिंग अर्ली स्पेशली मेंटली और फिजिकली, और कॉनिटेटिव मीनिंग आ जाएगा अनयूजुअली इंटेलिजेंट, मैच्योर और टैलेंटेड फॉर वंस एज, often implying a sense of surprise or admiration. Second है gallivanting, इसका denotative meaning बन जाएगा traveling from place to place especially for pleasure, और connotative meaning है roaming or wandering aimlessly, often implying a sense of carefree abandon or frivolity. Third है speck, डिनोटेटिव मीनिंग है स्पेक का अ स्मॉल स्पॉट और पार्टिकल, और इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है समथिंग टाइनी और सिग्निफिकेंट, ऑफन इम्प्लाइंग अ सेंस ऑफ सिग्निफिकेंस और ट्राइवियलिटी। फोर्थ है ब्यूरो, इसका डिनोटेटिव मीनिंग है अ पीस ऑफ फर्नीचर विद ड्रॉर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग क्लॉथ्स और ऑफिस सप्लाईज। कॉनोटेटिव मीनिंग है इसका अ फॉर्मल और ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफन इम्प्लाइंग अ सेंस ऑफ अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी। फिफ्थ है इम्पेसिव, इसका डिनोटेटिव मीनिंग है शोइंग नो इमोशन और फीलिंग, और कॉनोटेटिव मीनिंग है बीइंग काम, कंपोज्ड और अनरिस्पॉन्सिव, ऑफन इम्प्लाइंग अ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ और कंट्रोल। सिक्स्थ है हर्थ, हर्थ का डिनोटेटिव मीनिंग है द फ्लोर और सरफेस ऑफ फायर प्लेस, और इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है अ वार्म, वेलकमिंग और कोजी प्लेस, often implying a sense of comfort, security और family. Next है part B, choose the correct options। यहाँ पे आपको कुछ sentences दिए गए हैं और इनके नीचे options दिए गए हैं, हमने इनमें से जो correct option है उसे choose करना है। First है the antonym of shabby, shabby का एंटोनियम क्या है? ऑप्शन ए है कोऑपरेटिव, ऑप्शन बी है एलिगेंट, ऑप्शन सी है जॉली, ऑप्शन डी है सिंसियर। एलिगेंट इज द करेक्ट ऑप्शन, तो शैबी का एंटोनियम है एलिगेंट। सेकंड है द एंटोनियम ऑफ इम्पेसिव, ग्रेडी या फास्ट या कोवर्डली या एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड है द एंटोनियम ऑफ डेलिकेट, पैशनेट, लॉयल, टफ या रोबस्ट। रोबस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ है द एंटोनियम ऑफ प्रिकॉशियस, ऑप्शन ए है गिफ्टेड, ऑप्शन बी है एडवांस्ड, ऑप्शन सी है टैलेंटेड, ऑप्शन डी है बिलेटेड। बिलेटेड इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ है द एंटोनियम ऑफ हार्टीनेस, ऑप्शन ए इज इंडिफरेंस, ऑप्शन बी इज एंथुजियाज्म, ऑप्शन सी इज फ्रेंडलीनेस, ऑप्शन डी इज चीयरफुलनेस। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इंडिफरेंस। पार्ट सी है मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स। आपको यहाँ पे कुछ रूट वर्ड्स दिए गए हैं, आपने जितने इनसे दूसरे वर्ड्स हो सके उतने वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट रूट वर्ड है कलर। अब कलर से कलरलेस भी बन सकता है, कलरफुल भी बन सकता है, डिसकलर भी बन सकता है और कलरिंग भी बन सकता है। सेकेंड है काउंट, काउंट से काउंटेबल भी बन सकता है, काउंटर भी बन सकता है, काउंट डाउन भी बन सकता है और रिकाउंट भी बन सकता है। थर्ड है प्ले, प्ले से प्ले एबल भी बन सकता है, प्लेयर भी बन सकता है, प्लेफुल भी बन सकता है और प्ले ग्राउंड भी बन सकता है। फोर्थ है वर्क, वर्क से वर्कर, वर्कफोर्स, वर्केबल, वर्कशॉप ये बन सकते हैं। नेक्स्ट है फेथ,
फेथ से फेथफुल, फेथलेस, फेथफुलनेस, अनफेथफुल, ये 4 वर्ड्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है, डायरेक्ट स्पीच मीन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, दीज आर इनक्लोज्ड विद क्वेश्चन मार्क्स विच आर कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास। बिलवास्ता तकरीर का मतलब है, डायरेक्ट स्पीच को बिलवास्ता कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को बिलवास्ता तकरीर कहते हैं। इसको अगर हम इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करना चाहें तो ये क्या बनेगा, बिलवास्ता तकरीर का मतलब है एक बोलने वाले के असल अल्फाज, ये इक़्तिबासात को हवाला जाती निशानात यानी इन्वर्टेड कोमास में बंद किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट कन्वेज द फुल सेंस ऑफ व्हाट समवन सेज। इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं बिला वास्ता तकरीर। डायरेक्ट स्पीच को क्या कहते हैं, बिल वास्ता, और इसे बिला वास्ता तकरीर कहते हैं। बिला वास्ता तकरीर में बोलने वाले के असल अल्फाज शामिल नहीं होते, बल्कि ये इस बात का मुकम्मल मफहूम बयान करती है जो किसी ने कहा हो। अब इसमें पार्ट ए है, रिकैपिटुलेट योर प्रीवियस नॉलेज अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एंड चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको कुछ डायरेक्ट स्पीच वाले वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इन्हें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट डायरेक्ट सेंटेंस है, माई फादर सेड टू मी माई सन नेवर चीट एनीवन। इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, माई फादर एडवाइज्ड मी नेवर टू चीट एनीवन। सेकंड है, माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस वॉच अ डॉक्यूमेंट्री। इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट वी शुड वॉच अ डॉक्यूमेंट्री। थर्ड है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर एंग्रीली ऑलवेज ओबे योर सीनियर। इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर टू ऑलवेज ओबे हिज सीनियर्स। फोर्थ है, माई मदर सेड मे यू प्रॉस्पर। इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, माई मदर विश्ड दैट आई माइट प्रॉस्पर। फिफ्थ है, ही सेड आई डिड नॉट गो टू द स्कूल येस्टरडे। इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा, ही सेड दैट ही हैड नॉट गॉन to school the previous day. Sixth है, the officer said call the next visitor. इसका indirect sentence होगा, the officer ordered to call the next visitor. Seventh है, the teacher said whose pen is it. इसका indirect sentence होगा, the teacher asked whose pen it was. Eighth है, she said to me what are you looking for. इसका indirect sentence होगा, she asked me what I was looking for. Ninth है, Zishan said, alas, I have failed the examination. इसका indirect है, Zishan exclaimed sadly that he had failed the examination. 10th है, he said, where are you going? इसका indirect है, he asked where I was going. 11th है, he said to me, please excuse me as I am too tired to go to market. इसका indirect है, he requested me to excuse him as he was too tired to go to the market. 12th है, she said, listen, can you hear someone coming? इसका indirect है, she asked me to listen if she could hear someone coming. 13th है, our teacher said, the sun rises in the east. इसका indirect है, our teacher told us that the sun rises in the east. 14th है, he said to his teacher, please explain this theory again. इसका indirect है, he requested his teacher to explain that theory again. 15th है, he said they are playing well. इसका indirect है, he applauded them for playing well. 16th है, he said to me have a good morning. इसका indirect है, he wished me a good morning. 17th है, he said to me when will you have completed your work. इसका indirect है, he asked me when I would have completed my work. नेक्स्ट है पार्ट बी, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है चेंज द फॉलोइंग पैसेज इनटू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में है, आपने इस पैराग्राफ को डायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो इस पैराग्राफ में जो पहला सेंटेंस है वो है, द फादर एक्सप्लेन्ड to his daughter that the internet had many useful applications.
अब अगर हम इसे डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना चाहेंगे तो इसी लाइन को हम इस तरह से लिखेंगे, द इंटरनेट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशंस, द फादर एक्सप्लेन्ड टू हिज डॉटर. Next, he mentioned that it could be used for educational purposes such as researching information for school projects and accessing online courses. इसको हम डायरेक्ट स्पीच में इस तरह से लिखेंगे, You can use it for educational purposes such as researching information for school projects and accessing online courses. Next, he also told her that the internet was a valuable tool for communication, allowing people to stay in touch with friends and family through emails and social media. इसे हम इस तरह से लिखेंगे, It's also a valuable tool for communication. He added, You can stay in touch with friends and family through emails and social media. Next line है, However, he warned her that it was important to use the internet responsibly. इसको हम इस तरह से लिखेंगे, However, he warned it's very important to use the internet responsibly. Next है, he emphasized the need to be cautious about sharing personal information. इसको हम इस तरह से लिखेंगे, You need to be cautious about sharing personal information. Next है, he suggested that she should balance her internet use with other activities such as reading books, playing outside and spending time with family. इसे हम इस तरह से लिखेंगे, I also want you to balance your internet use with other activities, he suggested. Why don't you read some books, play outside or spend time with family? तो हमारे लास्ट चैप्टर की भी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.